The Ekal Vidyalaya aims to promote education among rural and tribal children. To achieve this goal, millions of Ekal volunteers are working on the ground. One such volunteer is Ranjan Kumar Bagh. Ranjan Kumar Bagh was born in Balangir, Odisha, and has been associated with the Rashtriya Swayam Sevak Sangh since 1985. Alongside his studies, Ranjan has actively worked for the RSS. After graduating, Ranjan Kumar Bagh worked as an RSS Pracharak for 2 years starting in 1992. From 1994 to 1998, he served as an Acharya with Vidya Bharati. During his tenure as an Acharya, he took on the role of Sangh Sanchalak for Ekal Vidyalaya for 6 months in 1996. Then again, in the year 1998, Ranjan Kumar ji joined Ekal Abhiyan full-time. For the past 25 years, he has been associated with the Ekal Abhiyan, overseeing the primary education department. 25 साल एक शिक्षण के काम में देना और फिर वनवासी क्षेत्र में, ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस काम में हम पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं और जो अपना जो सपना था कि गांव में एक अच्छे आचार्य देना और इनके लिए प्रशिक्षण तैयार करना, पाठ्यक्रम योजना बनाना, ये हमारे बहुत अनुभव रहा है कि हम ये 25 सालों में बहुत सारे आचार्य अभ्यास वर्ग और सेवाव्रतियों को भी इस प्रशिक्षण में हम प्रस्तुत किए एवं अच्छे प्रशिक्षक बन करके गांव में एक अच्छे आचार्य दें, इसलिए हम पूरा काम करें। Ranjan had to face a lot of difficulties in the village areas while he joined the Abhiyan, but the generosity of the villagers made every task seem easier. जिस समय हम प्रारंभ में काम किए, उस समय गांव में प्रवेश करना बहुत कठिन था। कई जगह ऐसा होता था कि साइकिल रख करके 2 किलोमीटर चल कर भी पहाड़ी के क्षेत्र में भी गांव में पहुंच करके हम इस काम को शुरू किए। ऐसे में लगता था कि इतना माने आज की स्थिति में भी इतना गंभीर क्षेत्र है जहां ना बिजली था, ना जाने आने का मार्ग था और इसमें मज़ा आ रहा था और वहां पहुंच करके यही महसूस हो रहा था कि गांव के लोग कितना सरल है, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था। एकल विद्यालय ही ऐसा एक माध्यम रहा जहां पहुंच करके हम इस काम को कर रहे थे और आनंद में कर रहे थे। He also says that Ekal Abhiyan moves along with time. The Abhiyan is not only limited to the old traditional way of teaching, rather it evolves with time. After Corona hit the world, digital education was in trend. So, Ekal Abhiyan also adapted digital education and started teaching students with tablets and computers. Currently, Ranjan Bagh is fulfilling the responsibilities of the Central Joint Training Chief and the Central Head of the E-Education Department under the Primary Education. He is enjoying his time working with Ekal Abhiyan and aims at dedicating his best of will to develop the forest areas of India.